Well, now we have seen that for adiabatic process, Pv to the power gamma is equal to constant. So we can also do something. We can also write for two different states. P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma. Alright? But एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोगों को कोई सिचुएशन में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन चाहिए होता है, नॉट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, रिमेंबर वी आर डूइंग ऑल ऑफ दीज आर एडियाबेटिक प्रोसेस के नीचे. सो इफ वी हैव, वी नो दैट Pv इक्वल टू nRT होता है, राइट? हम लोगों को किसके बीच में रिलेशन चाहिए? प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम नहीं चाहिए. सो वी कैन राइट वॉल्यूम एज nRT by P. nRT by P, राइट? सो ये वॉल्यूम की जगह में हम लोग P1 into nR T1 by P1 whole to the power gamma is equal to P2 into nR T2 by P2 whole to the power gamma रिप्लेस कर सकते हैं. सो अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? P1 देखो nR to the power gamma, nR to the power gamma दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. सो P1 by P1 to the power gamma into T1 to the power gamma is equal to P2 by P2 to the power gamma into T2 to the power gamma. So you know when it is divided, the powers are subtracted. So P1 to the power 1 minus gamma T1 to the power gamma is equal to P2 to the power 1 minus gamma T2 to the power gamma. So the relation between pressure and temperature will be this. Alright? In some other case, if they want you to find out a relation between the volume and temperature, then we get rid of pressure. We can also write pressure equal to nRT by V. So अगर वो रिप्लेस कर देते हैं तो nR T1 by V1 into V1 to the power gamma is equal to nR T2 by V2 into V2 to the power gamma. So nR cancels from both sides. So you can write T1 into V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 into V2 to the power gamma minus 1. So that is the relation between temperature and volume in case of adiabatic processes. Is that clear? समझ में आया?